Hello students, very good morning to all of you. Today I will cover the moment distribution part 2. In today's lecture I will cover some of the past year questions of the engineering services main exam and some discussion about the non-sway portal frames. So in my last lectures I have covered some of the basics, how to know the distribution factor, how to calculate distribution factor, relative stiffness and stiffness like this. In today's lectures I will cover the PYQ of the main examination of engineering services. So let's start. So this is a question, it came in engineering services 2021 and it carries 20 marks. So analyze a continuous beam showing in a figure. During loading, this spot B sinks by 12 mm. So this is a continuous beam and this end is fixed. The simplest spotted is our roller and this portion is overhang of 12 kilonewton. This UDL is 20 kilonewton per meter and a concentrated load of 19 kilonewton, which is 3 meter from this A spots. So what he says that during loading, the spot B, this spot sinks by 12 mm, means like this. So there is a sinking of 12 mm. So will be like this. So it means the value of E is equal to 210 gigapascal, means E is equal to 2.1 into 10 raised to the power 5 Newton per mm square. Moment of inertia I is 5131.6 into 10 raised to the power 4 mm4. EI is constant. Draw bending moment diagram and elastic curve. So in moment distributions, first of all we will calculate the fixed end moment. And in this fixed end moment, our sign convention will be clockwise moment is positive and anti-clockwise moment negative. So this is the sign convention which will follow in this chapter moment distribution as well as in the coming chapter of slope and deflection methods. So in this analysis, when we plot in the moment distribution table, so in order to avoid the confusions, this is a simple notations that clockwise moment will be positive, anti-clockwise will be negative. Forget about the sagging hogging concept unless you came to a final point of drawing the final bending moment diagram. So it is very simple, clockwise moment positive, anti-clockwise negative. So when you draw the final bending moment diagram, then you can use the concept of sagging and hogging. Before that, it is simply clockwise moment positive, anti-clockwise moment negative. So first I will calculate the fixed end moment. Fixed end moment for this beam AB. This will be 1 because of this point load. So this will be this point load and another fixed end moment because of this sinking. So both this sinking effect, if you say this is a point load,
So my beam will deflect like this, and the moment will be in this directions, and due to sinking, I am talking about this AB portion. So my moment will also be so this moment will be in the different directions. So because of this load, this moment will be 90, this is negative 90. Since it is anticlockwise, it will be negative 90 into 3 into 4 square upon L square. L is 7 meter. So this is the fixed end moment because of this load. Now because of this sinking, this is delta 12 mm, it will deflect like this. So moment at this point will also be, this will be in the same directions. So this is anticlockwise, this is also anticlockwise, means this is also negative, and the formula is 6 EI delta upon L square. This is the formula for fixed end moment because of the sinking, 6 EI delta upon L square. Let us calculate the 6 EI delta first. So EI delta means EI into delta. Delta is 12 mm. So this is 12 mm. So you can calculate the 6 EI delta. This will be 6 EI delta is equal to E is equal to 2.1 in 10 raised to the power 5 megapascal. It is in Newton per mm square into I. I is equal to 5131.6 into 10 raised to the power 4 mm. This is I into delta. Delta is 12 mm. So you will get this value. This will be in Newton mm raised to the power 3. You will get this value in Newton cubic mm raised to the power 3. If you want to convert it in kilonewton, so you will divide it by 1000. So this will be in kilonewton, and for this mm you will 1000 meter raised to the power 3. So it means you will divide it by 1000 for making in kilonewton. It will be 2.1 into 10 raised to the power 5 into 5131.6 into 10 raised to the power 4. So when you divide it by 1000, so this Newton will become kilonewton, and this mm cube means you will so this is 1 upon 1000 in meter raised to the power 3. So this way you will get in kilonewton. So this will be 10 raised to the power 9. So it will be now it is in kilonewton meter. Kilonewton
meter cube. So this and this will cancel. So it will be 10 something. We will get in 10 something. So kilonewton, and this multiplied by 12 also. This will be 60 into 2, 120 something, 129.31 kilonewton cube. This is 6 EI delta. So MAB will be this minus this 129. So this is 6 EI will be 129.3163. 3163. So this is 6 EI delta. Now it is in kilonewton per kilonewton cubic meter. 6 EI delta upon L square. L is 7. You will get the fixed end moment here. And so this will be, you will get minus 104.00 kilonewton meter. And for fixed end moment, this MBA will be, this will be fixed end moment, this MBA will be, because of this load, it will deflect like this. So this moment is clockwise, so it will be positive, and value 90 into this 4 into this 3 square upon 7 square. This is due to this load, and because of this sinking, if you see, it will deflect like this. So this will be negative. This will be negative because of this sinking. This will be negative since it is anti-clockwise. It is anti-clockwise. Due to this sinking, my beam will deflect like this. So it will be anti-clockwise, and this end also it is anti-clockwise. So it will be negative 6 EI delta is equal to 129.3163. Just we have calculated upon L square. L is 7 meter. So we will get the value of MBA, and MBA will be this one, 50.29 kilonewton meter, and this is positive. MAB is equal to negative. Now my moment at this point, this will be, for this span, this is UDL, this span is UDL. So fixed time moment for this portion, for this, I am taking about this BC portion. So fixed time moment MBC will be, because of this load, the beam will deflect like this. So it is anti-clockwise, and this one is clockwise, and the value will be WL square upon 12. This is the formula, WL square upon 12, fixed end moment because of UDL. So this is negative 20 into 5 square upon 12, and there is a, this spot is sinking is also. So, there is a sinking. So, this is 20 into 5 square upon 12, and there is a, this spot is sinking is also. So, there is a sinking. 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 So, there is a sinking
So this support is basically there is a 12 mm sinking. So it is like this. So it means because of this sinking, moment will be 6 EI delta upon L square. This is clockwise, so it will be positive. It will be positive. So 6 EI delta is equal to 129.3163 upon L square. L is 5 square. You will get the value of MBC. MBC, this will be minus 10.63 kilonewton meter. Similarly, moment here MCB, fixed end moment for CB, this UDL, it will deflect like this. So this is clockwise. So it is 20 into 5 upon 5 square upon 12. This is clockwise, means positive. And due to sinking also, it will deflect like this. So moment will be like this. So this is also clockwise, and this will be 6 EI delta upon L square formula. So this will be positive. So for this span it will be clockwise both way. It will be 6 EI delta is equal to this one upon L square. So we will get this CB, and this is 72.7 kilonewton meter positive. And for this portion, moment will be like this. Moment will be like this. For this, it is like this. So this is 12 kilonewton and 1.5 meter. So this will create moment in this way. So to counteract, this will be MCD. So MCD, fixed end moment for CD, yeah, MCD you can say. This will be anti-clockwise, and it will be 12 into 1.5, and this is negative. So it is minus 18 kilonewton meter. Minus 18. So these are my fixed end moment. Now I will calculate the distribution factor. So distribution factor, so in this case I will take this as a, this B will act as a joint. So this is this joint, and I will make a table, joint member, then relative stiffness, then total relative stiffness, and distribution factor. So I will make this table. Now joint is this B, and one member is BA, this BA, another member is BC. So relative stiffness for this portion is, as we know, this end is fixed, so it will be I upon L. I is the moment of inertia divided by the length. So I upon 7, and this end, if you take this member BC, then this is a hinged one. So simply supported hinged, so it will be 3 by 4. In case of simply supported or hinged, 3 by 4 I upon L.
So it will be 3I upon 20. 3I upon 20. So if you multiply this by 20, numerator and denominator, you will get 20I upon 140. If you multiply this by 20, you will get 20I upon 140. And if you multiply this by 7, you will get 21I upon 140. If you add both, you will get 20, 21, 41 upon 140I. Now distribution factor of this divided by this, you will get 20 upon 41, and this will be, this is 21 upon 41. These are my distribution factor. These are the distribution factor. This one and this one. Now you will make a table. This is my moment distribution table. So this end is fixed. My beam is like this. So this end, this is B, 3 meter, 4 meter, this is 7 meter, A, B, C and D, and there is a UDL. So this is 90 kilonewton and 20. So this is the beam. Now this is my moment distribution table. This end is inside. So for this CD portion, my moment is, this is anti-clockwise, 12 into this minus 18, and for CB, this is the value MCB. This is MCB fixed end. I will plot, and this will be MBC. MBC I will plot here. This is MBC, and MBA is equal to 50.29 plus, and MAB is equal to this one. So in the distribution table, this is my moment distribution table. I have plotted the value MAB, MBA, MBC, MCB, MCD likewise. And this joint, my moment distribution factor for this BA portion is 20 upon 41. For this BC portion, it is 21 upon 41. These are my moment distribution table, distribution factor. So if you see at this point, this is C joint. If you pick this, so algebraic sum of the moment at this point, that should be equal to 0. So if this is minus 18, then moment for this portion must be plus 18. This is minus 18, so here it will be plus 80. So what this plus 72.70, what I will do, I will eliminate it. I will eliminate it by putting minus 72.0, so that this becomes 0, and thereafter I will apply a plus 18, so that my moment at this point will be plus 18. So either way you can say, otherwise you can say for this my CD, for joint C, sum of MCD plus MCB, this must be equal to 0. So sum of this moment and sum of this moment must be equal to 0, but this is 72.0 and this is 18.0. So this is 54.70 plus is extra. So what you will do, you will apply a correcting moment of
minus 54.70. So that my for equilibrium my sum of this MCD and MCB will become 0. So I will apply a moment of minus 54.70 at this point, and half of this will come here. So this is one procedure. In here, first I have deducted this one, thereafter I have applied plus 18. So either way you can do this. So in my case, there is one procedure is this: you apply a moment of minus, the sum of this will also be minus 50.40, and half of will be 27.35. This is also equal to 27.35. So the procedure is same. So in this case, what I have done, first I have this is minus 18, so it will be plus 18 here. So first I have cancelled this one by putting minus 72.70, so that this sum will be 0. So when I applied a minus 72.70 moment, so half of this will carry at this point. 6, this end is fixed, so it is fixed, it will treat as a fixed end. So half of this correcting moment, you have applied a correcting moment of 72.70, so half of this will transfer at this point. Half of this will be 36.3, and of the same sign, of the same direction, of the same sense. So whatever sign you will use, half of this, so it will also be minus. If this is plus, this is plus, and half of this will carry over. Now this is 0, the whole is 0, but the moment at this point MCB should be equal to plus 18. If it is minus 18, it should be plus 18. So then I have applied a correcting moment of plus 18. Then half of this means plus 9 will come here. Now I will draw two parallel lines and take the sum of this. So it will be minus 18, and this is minus, the sum of this will be minus 37.98, and this is plus 50.29, and this is minus 104.0. Again, if you see at this point, at B point, the sum of MBA for equilibrium of this joint B, sum of MBA plus MBC, this sum should be equal to 0. So, but it is not equal to 0. Both should be equal and opposites. So it means it is sum of this is not equal to 0. It is plus 50.29 and it is minus 37.98. It means it is plus 50.29 minus 37.98 means 1, 3, so it is 12.31. So 12.31 plus 12.31 is the extra moment. So plus 12.31 is the extra moment which is acting at this point. So for making this sum equal to 0, what I will do? I will apply a minus 12.31 kilonewton, so that this sum will become 0. So I will apply a correcting moment of minus 12.31 at this point, and this minus 12.31 will get distributed there and here according to the distribution factor. So when you multiplied this minus 12.31 by this distribution
distribution factor, you will get this one. Similarly, when you apply this distribution factor and multiplied by this 12.31, you get this one. So this will be slightly 6.31, and so the minus 12.31 will, the sum of this will be minus 12.31. So this is my correcting moments, and this applied correcting moment will get distributed in this part and this part according to the distribution factor. You will multiply this by the distribution factor 20.41 and 21.41. So you will get this one. And when you applied a correcting moment of this, you have applied this moment minus 6. So half of this will come here. Why? Because this end is fixed. When you apply this moment, half of this will come here. So it will be minus 3.0, and half of this will not come in at this end, since this end is not fixed, it is simply supported. So when the other end is simply supported, no carryover moment will be there. Carryover moment will be only in case when the other end is fixed. So half of this will come here and no moment will be here. Now sum of this, it will be minus 107.00, this will be plus 44.29, and this will be minus 44.29, and plus 18, this is minus 18. These are my final moments. These are the final moments. So now these are my final moments. So this is minus. Minus means my sign convention is anti-clockwise, negative, and clockwise, positive. So this moment is minus. Minus means anti-clockwise. So this moment is anti-clockwise, and amount is 107.00 kilonewton. So this is MAB, and this MBA, this is MBA. MBA means this one. This is positive, so positive means clockwise. So this moment is 44.29 kilonewton meter. Similarly, for this portion, this is MBC. So MBC is this one. MBC is minus, so this is anti-clockwise, and it is 44.29. Similarly, this is MCB. MCB is this one. So this is plus 18. So it is plus 18 kilonewton meter, and this is negative 18. So now these are my final movement at this point. So now so if you separate this portion, if you take this AB portion separately, it will be like this. So this will be AB. So this moment is 107.00 kilonewton meter, and this is 44.29, and this one is 90 kilonewton. This is 3 meter, and this is 4 meter. So total is 7 meter. So you get this one. Now bending moment for this portion will be like this. So this is
So this is 107 and this one is 44.29, 3 meter, 4 meter and 90 kilometer. So if you see this 107 and 44.29, they are try to create a hogging moment. So because of this moment it will deflect like this. So this will create a hogging moment. So in the direction of the arrow, the direction of arrow is like this. So you plot on the upward side. The direction of the arrow, you see the direction of the arrow, it is on the tension side. So it will be tension in this end, it is hogging. So tension is here and there is a compression on this side. So plot it on the tension side, these moments. So it is 107. You see the direction of the arrow. So it is, if this is like this upward, so you plot it like this. Similarly, if you see the direction of the arrow, it is try to lift it. So it is hogging. So it will be 44.29 kilonewton. So it will be upward like this. Both are upward like this. This is my hogging moment. And on this, it is like this. So this is 90 kilonewton. So you treat it as a simply supported beam. This is 90 kilonewton. This is 3 meter and this is 4 meter. If you plot the bending moment diagram, it will be something like this. And it will be sagging because it will deflect like this. So it will be sagging, and sagging I will plot on the upward side. So this is sagging moment. So because of this load, it will be a sagging moment, and this amount will be how much? This will be 90 into 3 into 4 by 7. 90 into 3 into 90 into 3 into 4 by 7. So you will get this moment. When you superimpose this moment, this is sagging, this one is hogging. This will hogging, and this one is sagging. When you superimpose this diagram on this, it will be like this. So this portion, this will be plus, this is minus. So this will cancel, this portion will cancel, and now this will be minus, this is positive, and this is negative. So your moment will be like this. So this total moment from here to here, this is how much? This is this one, 90.3 into 4 by 7. So this will be 108.7. So this is 108.7. This total is this one. When you subtract this value, you will get this one, and this will be 74.16 kilonewton meter. So this is from this point to this point. So this is 74.16. So for this, this value you can calculate from interpolation. For finding this, what will you do? This is 44.29. So this plus difference of this and this is this. So it is 107.60 minus 44.29. You will get this one. So this divided by this length.
and is equal to this divided by this length. So when you multiply this by this is 4, you will get this ordinate, and this ordinate when you subtract from this you will get this one. So this is 74.16 kilonewton meter. So this is bending moment for AB portion. For CB portion, if you see, it is like this. So this moment is 44.29 and this is plus 18. This clockwise and this is the UDL. So you will get this one. Now this is the B, C 20 kilonewton per meter. This moment is 44.29 and this is 18. So what are you to do? This moment you see direction of the arrow. This will be like this. So this is hogging 44.29. You plot it on the upward side. Since the direction of the arrow is to try to deflect the beam in the this upward side, so you plot in the direction of the arrow. It is 44.29 and this is 18. And on this UDL will create a moment like this. This will be WL square upon 8. So this is sagging and this is hogging. So you will superimpose this one. So you will get this one. So this will be positive, this is negative, and this portion will cancel. So this will be plus and minus, this will not be there. So now this is the bending moment for this portion. And similarly, you find this by interpolations, and when you subtract this one from WL square by 8, you will get 31.35. So this value is 31.35 kilonewton meter. So this is the bending moment for this portion. And for this portion, similarly, for this portion, it will be like this 18. It will be like this. For the remaining portion, for the overhang portion, since this moment is like this, it will be 12 into 1.5, so it will be 18. So it will be like this. So now this is my final bending moment diagram. If you connect, if you add both the diagram, you will get this one. So this is the final bending moment diagram. 107, 74, like this. So this is my final bending moment diagram. Elastic curve, how to plot the elastic curve? So if you see, these are my point of contraflexures. This one where the bending moment changes its sign is a point of contraflexure. This is point of contraflexures. This is the point of contraflexures. So at these points, my curvature will change. In addition to this, it is also at this point where the bending moment either it changes sign or becomes 0. And this one. So if you draw it, my curvature will be like this. First, since deflection is 0 here, so it will be, there is settlement at this point. So at this point, curvature will be upward, and down it is downward. It is point of curvature. And at this point also, my curvature will change from concave to convex. And then at this point, and then again at this point, so it will again sag. And at this point also, it will curvature will change its sign. So finally,
it will be like this. So this is my deflected shape, or you can say elastic curve. These are my point of interflexures. Another numericals. This question came in Engineering Services 2022 of 20 marks. A continuous beam ABC consists of two span AB and BC of length 15.5 meter and 11.50. So this is a continuous beam. This span is 15.5. This is 11.5, and the span AB carries a UDL of 28 kN per meter, and span BC carries a point load of 100 kN at 8 meter from spot B. So this is the UDL of 28 kN per meter, and there is point load of 100 kN, which is 8 meter from this spot. EI is constant for both the span. The end supports A and C are fixed. The supports A and C are fixed. This support A is fixed and this C is also fixed. While support B is simply supported. This support B is simply supported, and determine the support moments and reactions. Also draw SFD and BMD. Similarly, so for this portion, if you see this UDL, it will deflect like this. So anti-clockwise moment negative, clockwise moment positive. This is my sign convention for moment distribution. So this is anti-clockwise, so this will be negative. Fixed end moment of MAB, so this will be negative, and the value will be, in case of UDL, it is WL square upon 12 both sides. So W into L square upon 12, you will get this one, and the same moment you will get here, but it will be clockwise in this case, it will be positive. So plus 560.58 kilonewton meter is the moment of this one. Then for this portion, this is anti-clockwise, and in this MBD value will be 100 into this 8 into 3.5 square upon 11.5 square. This is MBD, MC, BC, MC, and MCB will be, this is clockwise, so positive 100 into 3.5 into 8 square upon 11.5 here. You will get this value. This is MBC and MCB. Now, first I will calculate the distribution factor. Distribution factor for joint B. So this is joint B, and member is BA, another member is BC. So joint member, joint is B, member is BA, BC, and relative stiffness of this portion is equal to moment of inertia I upon 15.55, and this will be, for this BC portion, it will be I upon 11.5. Since both the ends are fixed, so this end is fixed, it will be I upon L, and this end is fixed, so it will again be I upon L. So this is, and total relative stiffness, this will be sum of this plus this. Then
distribution factor, and this will be this divided by this, again this divided by this. We will get the distribution factor like this. It is I upon this one, sum of this plus this is equal to this one. Now this upon this, you will get this one. So this is the distribution factor for this BA member, and this divided by this, you will get this one. This is the distribution factor for BC member. Now this is my moment distribution table. So my beam is like this. This is the joint B. So there is a UDL at this portion. (28 kilonewton per meter), and this is 100 kilonewton. And the distribution factor for BA is this one, and for BC is this one. You will plot it like this. At B, these are my distribution factor. For BA, this is C, this B, and this is A. So distribution factor for BA is this one, and for BC, this one. And fixed end moments MAB is equal to this much, MBA is equal to this. These are my fixed end moments. These are MAB is this one, and MBC. This MAB, MBC. These are the fixed end moment for this portion, and for this portion, my fixed end moments are these one. So you plot it like this. So this is MBC and MCB. Since both the end are fixed. Now, as we know, sum of this moment and sum for equilibrium of joint B, for the equilibrium of this joint B. So sum of MBA plus sum of MBC, this must be equal to 0, and this is plus 560.58, and this one is minus 74.10. So it means it is 8, 4, this minus this, so it is 486.48 plus. So this moment is extra. So this is the extra moment. This extra moment I have to, for making it 0, for making this extra is 0, I will apply a correcting moment of same value. Since this is plus 486.48, so I will apply a correcting moment of this minus 486.48.
and this minus 486.48, this will be distributed in this MBA and MBC according to their distribution factor. So when you multiply this by this distribution factor, you will get the moment for this BA. Since this distribution factor for this member, so we will get this one. So this is minus 209.19. You will get this one. And when you multiply this value by the distribution factor of this one, you will get this minus 277.29. So now when you applied this correcting moment of this minus 209.19 and the other end is fixed, this end is fixed. So half of this moment will be carried over to this point, this joints, this post. So half of this will come here. So half of this will be 104.60, and of the same sign, if it is minus, this will be minus. Similarly, this end is fixed, so half of this will come here. So half of this will be minus 138.65. Now sum of this plus this is minus 665.88, and this plus this, you will get this one, this plus this, you will get this, this plus this. Now these are my final moments. These are my final moments. So this minus 665 minus means anti-clockwise. So this moment is like this, 665.18 kilonewton meter, and this MBA means this moment. This is clockwise. So clockwise, positive means clockwise. So this moment is 351.39. For this member, this moment is anti-clockwise. This is minus means anti-clockwise. This is plus means clockwise. Now these are my moments. So you can draw the final bending moment diagram for this portion, and this will be like this. For this is AB portion. AB portion look like this one. This moment is 665.18, and this is 351.39, and this is UDL of 28 kilonewton per meter. So these moments, so you see the direction of the arrow. Direction of arrow is towards the tension side. So you plot this value in the direction of the arrow. So this will be 665.18, and this also upward 351.39 kilonewton meter. So you see the direction of the arrow. If the direction of arrow is towards the upward side, so always on the tension side, so tension will be on this side and compression will be this way. So it will deflect like this. So this is a hogging moment. So tension will be on this point and compression will be here. So plot on the tension side. So these are my moments, and it is hogging. Now this UDL, treat it as a simply supported. This UDL, it will deflect like this. It will be sagging. So bending moment will be like this, and it will be WL square upon 8. WL square means
20 into L, this L is equal to 15.5 square upon 8. You will get this value. So when you superimpose this sagging and hogging moment, you will get like this. So this portion will cancel, minus and plus. So now this is my hogging and this one is sagging. Again this is hogging. And this value will be total this value, which is this one. By this you will get total this ordinate. And when you subtract this one, obviously my bending moment will be at the center. So this is at the center. You can find this ordinate by interpolation. And this will be 351.39 plus this one. This will be this one 651.18 minus 351.39. We will get this one. This divided by this. And when you multiply this by this length, this is half of this. Obviously, again also this is UDL, so it will be average of this and this. This value will be average of this one. So this is half of 15.5. Otherwise, simply you can find the average, and when you subtract this from the final value, you will get this one, and this will be so 332.59 you will get. You get this one. Again for this portion, if you see, this is BC. So this is 351.39 and this one is 30.73. So bending moment will be like this: upward side 351.39 and this is 30.73. So this will be hogging, and bending moment because of this point load, treating it as a simply supported, will be like this. And this ordinate will be how much? This is 100 into this length into this one divided by total length. You will get this value. And when you superimpose this, so this value you already know that this minus this value, this you can calculate from the interpolation. So finally you will get this one value. So this is the bending moment at this point. This is hogging. So this is the bending moment for this portion. Now if you find the reactions, then reaction at this portion will be of two parts. One will be of, for this portion, if see it is RB1, and for this portion it will be RB2. So total reaction RB is equal to RB1 from this side and RB2 from this side. So if you draw the free body diagram, it will be like this. For AB portion it will be like this, and for BC portion it will be like this. So these are the free bending moment diagrams for AB portion, and this is for BC portion. These are my moments. Now if you find this reaction, you want to find these reactions. For finding this area, what I will do, I will take moment about B. So here for finding this RA means for finding the reactions RA, जब हम reactions RA को मालूम करना है तो हम मोमेंट यहाँ पर लेंगे, इस पॉइंट पे मोमेंट लेंगे. I will take moment about this. So B पॉइंट पे हम मोमेंट लेंगे, and that moment will be this RA
इंटू दिस लेंथ। इसमें आप कोई भी साइन कन्वेंशन अपने हिसाब से मान सकते हैं, जो भी आप रिएक्शंस को निकालने के लिए, कोई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, आप कोई भी साइन कन्वेंशन अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। अगर आर ए इंटू दिस लेंथ, अगर मैंने इसको ये मूवमेंट, इस तरह के मूवमेंट को अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूं तो ओबियसली ये नेगेटिव हो जाएगा। 665.18 ये अपोजिट है, ये मोमेंट भी अपोजिट रहेगा। अगर मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूं तो ये नेगेटिव हो जाएगा। एंड ये जो मोमेंट 351.39 है, ये भी सेम इसी डायरेक्शन में है जिसमें आर ए है। तो आप कोई भी साइन कन्वेंशन फॉलो कर सकते हैं, यू कैन फॉलो एनी ऑफ द साइन कन्वेंशंस। पॉजिटिव नेगेटिव हो गई उसमें कुछ भी नहीं है, जो आपके दिमाग में, अगर आपने इसको पॉजिटिव लिया है तो इस साइड वाले मोमेंट को आप फिर पॉजिटिव ही लेंगे, अपोजिट साइड को नेगेटिव लेंगे। तो ये जो डायरेक्शन है आर ए का मूवमेंट करेगा, ये सेम डायरेक्शन में है, तो दिस विल आल्सो बी 351.39 मूवमेंट एट बी। तो आर ए इंटू दिस लेंथ माइनस दिस मोमेंट माइनस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 0. So from this you can find the value of the RA, and this RA will be equal to 196.75 kilonewton. So this is one. So RA is equal to 237.24. So this is 237.24 kilonewton, and for finding these reactions, अगर मैं बी पॉइंट पे रिएक्शन मालूम करना चाह रहा हूं तो ये जो बी रिएक्शन है आर बी, ये दो हिस्सों में बटी हुई है। इट इज one is for this RB1 from this side, and another is RB2. So this RB is basically consists of two parts. So this is RB1, RB2. So if you take this reaction from this portion, you will get RB1. If you find RB2 from this portion, and when you sum both, you will get RB. So अगर मुझे ये RB1 निकालना है तो उसके दो तरीके हैं। टोटल मेरा लोड कितना है, दिस इज 28 इंटू 15.5, सिग्मा वी इज इक्वल टू 0 हम इस पोर्शन में करेंगे। दिस इज डाउनवर्ड लोड माइनस दिस अपवर्ड रिएक्शंस। तो यू विल फाइंड दिस वन, दिस विल बी 196.15। एंड अगर मुझे ये मालूम करना आरसी इस पोर्शन में, तो मैं यहां से मोमेंट ले सकता हूं। आई कैन टेक मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट, दिस विल बी, now from this you will get this one RB1 196.15, and if you take moment about this point from this side, it will be RC into this length. इसमें आप कोई भी साइन कन्वेंशन मान सकते हैं अपने दिमाग में। RC इंटू दिस मतलब ये इसको इस तरह से रोटेट करेगा, RC इंटू दिस। तो अगर मैं इसको पॉजिटिव लेता हूं, आप किसी को भी पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हैं अपने दिमाग में, कोई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कंसेप्ट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। इफ यू फाइंड मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट, इफ यू ट्रीट दिस वन, सो ये आरसी इंटू दिस, मान लीजिए मैं इसको पॉजिटिव लेता हूँ तो आरसी इंटू दिस लेंथ, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये जो मोमेंट है ये अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर मैंने इसको पॉजिटिव लिया तो ये नेगेटिव हो जाएगा। आप कोई भी साइन कन्वेंशन फॉलो कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये लोड, ये मोमेंट ऐसे है, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में, सो ये भी नेगेटिव। और यहां पर जो मोमेंट है, ये मोमेंट जो है आपका है, ये इसके सेम डायरेक्शन में है। अगर ये रोटेट करके ऐसे आएगा तो ये भी उसी डायरेक्शन में है, तो दिस विल बी पॉजिटिव 351.39। ये इसी डायरेक्शन में, इट इज एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज आल्सो एंटी क्लॉकवाइज, इज इक्वल टू 0। आप इससे आरसी फाइंड कर सकते हैं, इससे आरसी की वैल्यू आ जाएगी। अगर मान लीजिए
मैं इसमें दूसरा साइन कन्वेंशन फॉलो करना चाह रहा हूं। मान लीजिए मैं इसको आरसी इंटू इसको मान लीजिए मैं नेगेटिव मान के चल रहा हूं। अगर मैं इसको मान लीजिए ये जो रोटेशन इसको नेगेटिव है, सो इट विल बी माइनस आरसी इंटू 11.5। उस केस में अगर इसको मैंने नेगेटिव मांगा तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा, और इसका डायरेक्शन भी सेम आरसी वाला डायरेक्शन है, तो फिर ये इसको भी मैं माइनस ट्रीट करूंगा। तो हेलो स्टूडेंट्स, sorry for the interruptions. Again, I am continuing the lectures. Due to electronic failure, some disturbance occurred. So I am recording from the point where the disturbance was there. So now the reaction RA we have already found, and this RC we can find by taking moment at this B point. This will be RC into this length minus this is equal to moment at this minus, this is RC into this minus 30.73 minus 100 into this 8 and plus this. Since the direction of this moment is the same as the direction of the RC moment, so it will be plus is equal to 0. So you can find RC. Either way, if you consider this negative, this also you can find the value of RC and that will be same. In this case, if you treat this negative, this will be positive and this will be negative. So either sign, positive, negative, you can assume. So that doesn't make the difference. So if you treat this moment negative, then this will be positive. If you treat this negative, this will be positive. So any of the sign convention you keep in mind and you find the reactions. That doesn't make the difference. But you must know that whatever sign convention you have applied here, the same should be applied at this point also. Now this reaction is 41.68. So now this RB2 will be, total downward load is 100. So this minus 41.68 you will get RB2. This is 58.32. Now this RB is equal to RB1 plus RB2 and you will get this RB will be 255.07 kilonewton. So you will get this total load, this is 255.07 kilonewton. Now all the reactions you have calculated, so we can draw the bending moment. So bending moment will be, this is 665.18. So this is like this, and this one is 350.39. So always it will be on the tension side, and you superimpose this one and you superimpose this one. So this value will be 332.59 and this is 115.16. These are, so these moments we have connected both. So this is negative and this one positive, this is negative, this is positive. For drawing the shear force diagram, this is my baseline and this reaction is 237.24. So this 237.24 shear force at this point will be this minus 28 into this one 15.5. So you will get 196.75 minus 196.75, and when you add these reactions 255.07 you will get this one 58.32. This is 58.32. So from this point and this point no load is there, so it will be constant. Then it will down 58.3 minus 100
you will get minus 41.68, and then it will be constant, then again it will be 41.68. So you will come here. So this is my shear force diagram. This one is positive, this positive, negative and negative. This is shear force diagram and this is bending moment diagram. So this way you can draw the shear force and bending moment diagram. Portal frames. The strain energy method becomes laborious for its application when the load system on the frame is not simple, and when the ends of the column are fixed, and when the different components have different sections. Means, as I have explained in my strain energy chapters, for analyzing the portal frame by strain energy method, by unit load method, or by Castiglione theorems, so it becomes very laborious due to multiple integrations, and when the moment of inertia is varying, in this case also it will becomes very lengthy and have a chances of error are there. So in these cases, this method moment distribution is very well applicable. So moment distribution method can be conveniently applied in the analysis of portal frames. So portal frames can be of two types. One is non-sway type of frames, another is sway type. Suppose this is my portal frames, so this will sway like this, and another is like this. So it is similar, so it will not sway. So this is sway type of frames. Now non-sway type of frame, in this case the two columns of the frames are identical with identical end conditions, and loading on the frame is symmetrical such that the frame does not sway to end side. If you analyze this frame, this is identical, this end is fixed, this is also fixed, length of both are same, this length is same, moment of inertia is I1, this is I1. So there is a load of Q at the same point, this is a load Q, and this distance is also same, and there is a UDL, and this member is common to all both. So this is non-sway type of frame. So when the column of the frames are identicals with identical end conditions and loading of the frame is symmetrical, if you cut it, so you will get the same portion. So such type of frame is non-sway. One figure, another figure. Suppose this load is acting L2 by 2, this length is L2, and on this member there is a UDL, and this UDL is for height of B. This B is same, this end is hinged, this is also hinged. So this L1 and L2 is same. So identical end conditions, identical loading, and identical cross-sectional area. This is also non-sway type of frame. So to determine the horizontal thrust for a portal frame from the final moments for columns. Suppose for this member, this is my portal frames, and fixed end moment you consider clockwise, as the clockwise moments are positive, anti-clockwise negative, so consider clockwise moments. You assume this is a clockwise MBA, this is BA and CD. So this you assume it clockwise. This also you can assume clockwise. This also clockwise. This also clockwise. You assume all the
clockwise movements, as the clockwise movement is positive. Now this is a horizontal force P, and there is a horizontal force P, and this reaction HA must be equal to this HD. If you want to find this HA, what you will do? You treat this as a column and take moment about B. Take moment about B. So now this HA, this horizontal reaction, you assume this direction of HA is like this. This HA will try to rotate it like this. If you take this positive, this will be HA into this height, and this moment is in the reverse direction. So this will be opposite to this. So if you treat this as positive, so this will be negative, and the direction of this will also be same as you assume this positive. So it will also be H1 into Y, and since you treat this positive, so this will be negative, and that should be equal to 0. Now HA you can find from this equation. So HA will be, on another side it will be MAB positive, this also positive, and this will be negative, divided by this H1. You will calculate this HA. Now this is the value of the HA. The same value you can find, suppose if you treat this direction negative, if you treat this direction negative, in this case what will happen? Now HA into this height, you are taking moment over this point, so HA into this, if you suppose this consider as a negative, so this will be minus HA into H. If you consider this as a negative, so consider this HA moment, HA into this negative, then this will be positive, this will be MAB, and this also negative. If you consider this negative, so this P into this side, this will also be negative, so this will be P into this Y, and if you consider this negative, so this will be positive, plus MBA is equal to 0. So from this HA into this is equal to this one. Now if you HA into this, if you take on the other side, it will become plus. It will become plus HA into H1, and so this will be MAB plus BA, MAB plus MBA minus PY is equal to H into H1. So if you divide this, if you take this H1 here, so you will get this one. MAB plus MBA minus PY upon H1 is equal to HA, and this value is same, both are same. So MAB plus MBA minus PY, this is also MAB plus MBA minus H1. Oh, this is P into Y divided by H1. So any of the sign convention you can follow, but if you treat this positive, then all the moments you treat positive. If you treat this negative, then all the moment along this direction you treat the same sign convention you have to follow. So you take moment, so other of the sign convention you can follow, that doesn't make the difference. So you will get this HA. Similarly, this HD you can find. Take moment about this, so it will be
taking moment about C. So it will be this SD will create a moment in this way. So this will be SD. Consider this moment, this anticlockwise, this moment you consider, मान लीजिए हम इसको पॉजिटिव लेते हैं. Suppose this moment SD into this side, so this will create moment in this direction. So if you consider this positive, so this will be SD into this side S2. ये जो मोमेंट है इसका डायरेक्शन अपोजिट है, सो दिस विल बिकम नेगेटिव. अब ये जो P इंटू दिस डिस्टेंस है इसका भी यही डायरेक्शन है, सो दिस विल आल्सो बी नेगेटिव. और ये जो मोमेंट है ये भी इसी डायरेक्शन में है, सो दिस विल आल्सो बी नेगेटिव MCD. दिस इज इक्वल टू 0. तो HD क्या होगा, अगर हम इसको इस साइड में लेके जाएंगे तो ये MCD पॉजिटिव हो जाएगा, MCD. दिस आल्सो विल पॉजिटिव MDC. दिस विल बी P into Y positive and this divided by S2. You will get SDC, SD. MCD plus MDC plus PY into S2. सपोज हम इसको उल्टा करते हैं, ये जो मोमेंट है इसको मैं मान लीजिए नेगेटिव मान के चलता हूं, इस डायरेक्शन, इस मोमेंट को मैं नेगेटिव करता हूं, तो ये SD इनटू दिस हाइट. अगर मैं इसको नेगेटिव कर रहा हूं तो ये मोमेंट पॉजिटिव हो जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो दिस विल बी MDC प्लस दिस आल्सो P इनटू दिस S2. और इसका डायरेक्शन भी सेम है, दिस विल आल्सो बी पॉजिटिव इज इक्वल टू 0. उस केस में SD क्योंकि माइनस का है तो हम इसको इस साइड लेके जा सकता हूं मैं, तो ये बन जाएगा SD इंटू S2 पॉजिटिव, और यहां बचेगा MDC या MCD पॉजिटिव प्लस MDC प्लस P इंटू S2 इज इक्वल टू SD इंटू S2. इस S2 को अगर मैं यहां ले आऊंगा तो आई विल गेट SD इज इक्वल टू MCD plus MDC plus PS2 upon S2, and this is exactly same. MCD plus MDC plus P, oh this distance is again Y, this will be P into Y, so same you will get here. So any of the sign convention you keep in mind, you will get the same. This is H1. Now suppose for finding this HD, जब हमने SD और SD निकाला इसका साइन कन्वेंशन माइनस आ गया, इसलिए माइनस 12 किलो न्यूटन. सपोज इस माइनस का मतलब ये है कि जो आपने साइन कन्वेंशन अज्यूम किया है वो सही नहीं है, वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा. अगर ये माइनस में आता, अगर मेरी HA की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब ये है कि ये नॉट टुवर्ड्स राइट, इट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट, इसका डायरेक्शन अपोजिट है. So if HA is positive, it means direction from the left to right जो आपने assume किया वो सही है. अगर SD पॉजिटिव है कोई भी है तो डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर ये SD पॉजिटिव है इसका मतलब जो डायरेक्शन आपने लेफ्ट टू राइट assume किया वो सही है. अगर ये नेगेटिव है देन इट इज नॉट टुवर्ड्स राइट, इट इज टुवर्ड्स लेफ्ट. तो इससे हम अगर वर्टिकल रिएक्शन हमें निकालनी है टू डिटरमाइन द वर्टिकल रिएक्शंस फ्रॉम द फाइनल मोमेंट्स, तो कैसे निकालेंगे. कंसीडर द फ्रेम शोन इन द फिगर. दिस फ्रेम, सपोज दिस इज माय फ्रेम ABCD, ये W1 लोड है. ये P लोड यहां पर लगा, ये Q है. दिस इज MAB, MCD, HA, SD. हमें वर्टिकल रिएक्शंस निकालनी है.
So vertical reactions at A and D, this shows the beam BC the same effect of loading to the column, transferring to the BC and C. ये कहना चाह रहा जो मेरी ये रिएक्शंस VA है और VD है, ये सेम यहाँ पर रिएक्शन रहेगी। अगर मैं इसको काट दूंगा तो ये सेम रिएक्शन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी BC पोर्शन में। तो दिस इज माय BC पोर्शन। तो इफ दिस रिएक्शन इज VA, दिस इज VA, तो यहाँ जो रिएक्शन VB आएगी वो VA इज इक्वल टू VB। सिमिलरली जो VC आएगी यहाँ रिएक्शन आएगी, ये जो रिएक्शन VD है वही सेम आएगी। ये एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा, वर्टिकल जो रिएक्शंस हैं एज इट इज यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे, क्योंकि अगर इन बिटवीन कोई वर्टिकल लोड नहीं लगा हुआ है, इन दिस कॉलम कोई भी वर्टिकल लोड यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, सो इट मीन्स ऑल द हॉरिजॉन्टल लोड, तो दिस सेम रिएक्शन विल बी हियर। VA जो रिएक्शन है वहीं VB आ जाएगा और जो VD रिएक्शन है वहीं VC हो जाएगा। एंड दिस इज W1BA, और यहाँ जो मोमेंट होगा दिस इज MBC, सपोज ये MBC है, क्लॉकवाइज हमने अज्यूम कर लिए, और ये MCB है। तो फॉर दिस पोर्शन BC, इस BC पोर्शन को अगर हम देखेंगे तो ये इस तरह से रहेगा W1, ये मोमेंट MBC, मान लीजिए हमने इसको MBCA अज्यूम किया है, और ये सेम रिएक्शंस यहाँ पर आ जाएंगी। कैसे आएंगी? वो इसलिए आएंगी, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम निकालूं यहाँ से इस पोर्शन का, तो वो इस तरह से आएगा। अगर मैं इसको यहाँ से देखें तो, क्योंकि इस कॉलम को सेपरेट अगर मैं करता हूं तो ये वर्टिकल रिएक्शन VA है, दिस मोमेंट इज MAB एंड दिस HA। तो कॉलम को अगर मैं सेपरेट करता हूं तो ये जो मोमेंट आएगा मेरा, सपोज दिस मोमेंट, ये मान लीजिए मैंने क्लॉकवाइज मोमेंट यहाँ मान लिया है MBA, तो ये रिएक्शंस हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस क्या आएगी, दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, ये लेफ्ट टू राइट, तो P प्लस HA यहाँ पर रिएक्शंस राइट टू लेफ्ट हो जाएगी। एंड क्योंकि इन बिटवीन कोई वर्टिकल लोड नहीं है, तो ये VA अगर अपवर्ड है तो यहाँ VA डाउनवर्ड हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इस बीम को हूं तो ये सेम वर्टिकल लोड VA यहाँ पर हो जाएगा। लाइकवाइज हियर दिस रिएक्शन VD है, तो फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस कॉलम दिस लोड इज SD प्लस Q, तो SD प्लस Q ये यहाँ लग जाएगा, एंड दैट SD प्लस Q विल बी इक्वल टू दिस। अगर हम इसको यहाँ से देखें तो ये HA प्लस P यहाँ पर है, तो ये टुवर्ड्स लेफ्ट HA प्लस P, और ये इधर हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू SD प्लस Q। अब ये जो VB अगर यहाँ है, VD सपोज VD है डाउनवर्ड है, तो ये VD अपवर्ड हो जाएगा, मीन्स VB इज इक्वल टू VD एंड VA इज इक्वल टू VB। तो फाइनली मैं ये मुझे मिल जाएगा। अगर मुझे वर्टिकल रिएक्शन निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, आई विल टेक मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट, दिस इज C पॉइंट, टेकिंग मोमेंट अबाउट C, तो ये हो जाएगा VB, दिस इज VB और VA यू कैन से, तो VA दिस इनटू दिस लेंथ, और ये लेंथ कितना है, L है। इस मोमेंट को सपोज किया मैंने पॉजिटिव मान लिया, तो ये मोमेंट ये भी सेम डायरेक्शन में है, इट मीन्स दिस विल आल्सो बी कंसीडर पॉजिटिव, और ये लोड की वजह से जो मोमेंट आएगा ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, सो दिस विल बी W1 इंटू B, ये नेगेटिव हो जाएगा। एंड दिस मोमेंट ये VA इंटू दिस, मैंने ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज ट्रीट किया पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस MCB, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से मैं वर्टिकल रिएक्शंस निकाल सकता हूँ। तो VA क्या हो जाएगा, इसको उस साइड में अगर हम लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस MBC, ये भी माइनस MCB,
ये प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाई एल। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा एम बी सी प्लस एम सी बी माइनस W1 इंटू बी, दिस डिवाइडेड बाई एल। तो इस वी ए माइनस का मतलब ये है कि ये डाउनवर्ड आएगा, इससे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो अगर मुझे ये वी डी निकालना है तो सिमिलरली अगर ये वी ए निकालना है तो टोटल लोड माइनस दिस, आई विल गेट दिस वन। अदरवाइज आई विल टेक मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट, आई विल गेट वी डी। तो दिस वी डी और वी सी बोथ आर सेम, तो इट विल बी, अगर मैं मान लीजिए वी सी इंटू दिस, ये इस तरह का मोमेंट क्रिएट करेगा एंटी क्लॉकवाइज। मान लीजिए मैं इसको नेगेटिव लेता हूँ तो वी सी इंटू दिस लेंथ ये नेगेटिव हो जाएगा, एंड दिस इज क्लॉकवाइज, सो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये लोड भी इसी डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, ये भी पॉजिटिव W1 इंटू ए। ये जो मोमेंट है यहाँ पर, इसको मैंने, इसका भी सेम डायरेक्शन है, इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया है, तो ये क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। एम बी सी इज इक्वल टू 0। तो वी सी को अगर मैं इस साइड में लेके आऊंगा तो ये वी सी इंटू एल, एंड दिस इज एम बी सी प्लस एम सी बी प्लस W1 ए इज इक्वल टू वी सी इंटू एल। एल्स को इससे डिवाइड कर देंगे तो इससे हमें बी सी मिल जाएगा। तो इससे हम वर्टिकल रिएक्शंस निकाल लेंगे। अगर मेरा ये पॉजिटिव आता है वैल्यू, इसका मतलब ये है कि जो डायरेक्शन मैंने अज्यूम किया दैट इज ओके। अगर ये नेगेटिव आता है, इसका मतलब ये है कि जो डायरेक्शन मैंने अज्यूम किया है वो अपवर्ड नहीं है, ये डिफरेंट है, डाउनवर्ड। So this way you can calculate the reactions horizontal and vertical. So this is another question. Analyze the portal frame shown in figure by moment distribution method. This question came in Engineering Services 2001 of 18 marks. 6 kilonewton per meter is the UDL. This is a portal frame BC. Carries a UDL of 6 kilonewton per meter, and this is 4 meter. 4 meter. So I have to analyze it by moment distribution method. So what I will do, same procedure. First I will find the max fixed end moment. Fixed end moment. So for AB, this is equal to 0, no load is acting, and this BA is also equal to 0. For this BC portion, MBC, ये मोमेंट मेरा ये डिफ्लेक्ट ऐसे करेगा तो ये ऐसे आएगा। कंसिडर दिस एज ए फिक्स्ड, फर्स्ट हम इसको फिक्स्ड मान के चलेंगे। तो ये माइनस एंटी क्लॉकवाइज है, एंड WL स्क्वायर अपॉन 12 इज द फार्मूला, इट विल बी माइनस 6 इंटू 4 स्क्वायर अपॉन 12. So this will be minus 8 kilonewton meter, and this will be same, but क्योंकि ये क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये मेरे फिक्स्ड एंड मोमेंट है। इसके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एक टेबल बनाऊंगा, उसमें ज्वाइंट मेंबर, देन रिलेटिव स्टिफनेस, then total relative stiffness, then distribution factor. तो ये मेरी टेबल हो गई। नाउ दिस इज द ज्वाइंट बी, और बी ज्वाइंट के लिए एक मेंबर मेरा बी ए है, अनदर मेंबर इज बी सी। सो फॉर दिस पोर्शन रिलेटिव स्टिफनेस इज आई अपॉन लेंथ, क्योंकि ये फिक्स्ड है
तो दिस विल बी आई अपॉन एल, आई अपॉन 4। इस केस में इस मेंबर को जब मैं लेता हूं तो इसका ये वाला एंड सिंपली सपोर्टेड है, ये आई अपॉन एल नहीं होगा, ये 3/4 टाइम्स ऑफ आई अपॉन एल हो जाएगा। आई इज इक्वल एल एंड एल इज 4, तो ये हो जाएगा मेरा 3/4 आई अपॉन एल, ये 3i/16 हो जाएगा। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाइड करूंगा तो ये 4i/16 कह सकते हैं। नाउ 4i/16 3i/16, अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो टोटल रिलेटिव स्टिफनेस मिल जाएगी जो कि इतनी हो गई। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होगा, इसका रिलेटिव स्टिफनेस BA का, दिस डिवाइडेड बाय दिस, यू विल गेट 4/7 एंड दिस डिवाइडेड बाय दिस, यू विल गेट 3/7। ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर दिस मेंबर BA is 4/7 and this BC it is 3/7। ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मिल गए, दिस वन। नाउ अब हम इसको इस तरह से हम प्लॉट कर सकते हैं, लाइक दिस। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यहां पर जो मोमेंट है दिस इज 6 किलो न्यूटन पर मीटर। तो इस बी मेंबर के लिए BA के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या है 4/7 एंड BC के लिए 3/7। दिस एंड इज फिक्स्ड, so this end is fixed and this is simply supported, this end C, A, B and C। इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर BA का 4/7 है और BC का 3/7 है, दिस वन 3/7। यहाँ पर फिक्स्ड एंड मोमेंट इस पोर्शन में 0 0 है एंड फॉर BC पोर्शन इट इज -8 एंड +8। अब क्योंकि ये मेरा सिंपली सपोर्टेड एंड है तो यहाँ पर कोई मोमेंट होगा नहीं, ये +8 जो है यहाँ मोमेंट 0 होना चाहिए। तो इसको 0 करने के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल अप्लाई ये करेक्टिंग मोमेंट ऑफ -8 सो दैट इट बिकम्स 0। +8 है तो -8 किलो न्यूटन मीटर का करेक्टिंग मोमेंट मैं यहाँ अप्लाई करूंगा सो दैट दिस बिकम्स 0। नाउ जब ये मैं यहाँ करेक्टिंग मोमेंट लगाऊंगा कोई भी, तो उसका हाफ जो है वो यहाँ पर कैरी ओवर हो जाएगा, हाफ ऑफ दिस विल बी -4 and remember if this is minus this will be minus, if this is plus this will be plus, so same साइन कन्वेंशन यहाँ होगा। तो इसका हाफ मोमेंट यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा -4। अब यहाँ पर क्योंकि 0 है तो फिक्स्ड भी है, दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका सम 0, दिस विल बी -12 एंड दिस इज 0 एंड 0। अब क्योंकि ये जो बी ज्वाइंट B है, यहाँ पर सम ऑफ MBA प्लस सम ऑफ MBC, दोनों मोमेंट का सम 0 होना चाहिए। फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस ज्वाइंट B, सम ऑफ BA MBA एंड MBC शुड बी इक्वल टू 0। बट इन दोनों का सम क्या है, ये -12 है। अगर इस सम को मुझे 0 करना है, ये सम 0 होना चाहिए, बट इसका सम -12 आ रहा है, तो इसको 0 करने के लिए मैं +12 का करेक्टिंग मोमेंट यहां लगाऊंगा, +12 का B पॉइंट पे। और ये जो +12 है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस मेंबर BA एंड BC एज पर दिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब यहां पर कितना शेयर होगा, ये इस 12 इंटू इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है 4/7, उससे मैं मल्टीप्लाइड कर दूंगा इसको। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाइड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 6 प्लस 6.86। और जब मैं इस मोमेंट को
उसका कितना हिस्सा, कितना शेयर इस मेंबर में आएगा, कितना हिस्सा इस शेयर में आएगा, दैट विल बी एज पर द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। जब मैं इसको मल्टीप्लाइड करूंगा इससे 3/7 से, तो मुझे मिल जाएगा प्लस 5.14। और ये मोमेंट जो मैंने यहाँ पर करेक्टिंग मोमेंट लगा दिया, टोटल सम इन दोनों का ये होगा। ये टोटल करेक्टिंग मोमेंट जो 12 है, कितना इसके हिस्से में आएगा, कितना इसके हिस्से में आएगा, ये उसके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ when this plus 6.86 correcting moment when I apply at this point, क्योंकि ये एंड फिक्स्ड है, तो इसका हाफ मोमेंट यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा प्लस 3.43। इसका हाफ यहाँ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड है, यहाँ पर मोमेंट 0 आएगा। तो कैरी ओवर जब भी होगा, जब अदर एंड फिक्स्ड होगा तभी होगा। ये एंड मेरा फिक्स की तरह ट्रीट करेगा, इसलिए इसका हाफ यहाँ आ गया। अब नाउ सम ऑफ दिस इज इक्वल टू प्लस 3.43, दिस इज प्लस 6.86, दिस वन इज माइनस 6.86 एंड दिस इज 0। ये मेरे फाइनल मोमेंट्स आ गए, फाइनल मोमेंट्स। तो नाउ आई कैन ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये मेरे फाइनल मोमेंट्स आ गए। तो यहाँ पर जो मोमेंट है ये प्लस है, प्लस 3.4, प्लस का मतलब ये है क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है 3.43। ये एम बी ए कौन सा होगा? ये वाला होगा। ये भी प्लस है तो ये भी क्लॉकवाइज हो जाएगा। एम बी सी ये माइनस है तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। एंड यहाँ पर 0 होगा क्योंकि ये सपोर्टेड है, यहाँ कोई मोमेंट आएगा नहीं। अगर मैं इस पार्ट को सेपरेटली यहाँ कंसीडर करूं, इस पार्ट को, तो इट विल बी लाइक दिस। ये जो पार्ट है मेरा, दिस मोमेंट इज 3.43 और ये है मेरा 6.86 किलो न्यूटन मीटर, दिस इज 4 मीटर। यहाँ एक वर्टिकल रिएक्शन आएगी, तो ये VA जो भी है यहाँ पर भी ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पर हॉरिजेंटल रिएक्शंस आएगी। हमने मान लीजिए ये डायरेक्शन अज्यूम किया है HA, क्योंकि इन बिटवीन कोई हॉरिजेंटल लोड नहीं है, तो यहाँ केम HA यहाँ आ जाएगा। तो अगर मुझे इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है तो ये कैसे होगा? लाइक दिस। इसके एरो के डायरेक्शन में ये घूम जाएगा। सो ये 6.86 हमारा, यू सी द डायरेक्शन ऑफ द एरो, क्योंकि ये एरो इस मेंबर को जब हिट कर रहा है तो ये इस डायरेक्शन में इसको धकेलने की कोशिश कर रहा है, तो ये मोमेंट मेरा इस तरह से आएगा। अगर मैं इस एरो को देखता हूं, ये मोमेंट मेरा इस मेंबर को इस साइड में धकेलने की कोशिश कर रहा है, पुश कर रहा है, तो इधर टेंशन आएगी। वो आई विल डायरेक्शन ऑफ द एरो को मैं इसको प्लॉट करूंगा, फिर हम इसको मिला देंगे, ये मेरा बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ खड़े होके, इफ आई सी, यहाँ सिटिंग होके इसको देखता हूँ, तो यहाँ खड़े होके जब मैं इसको देखता हूँ तो ये सैग करेगा, ये पोर्शन मेरा क्या करेगा? सैग करेगा, ये इस तरह से कुछ होगा, ये पोर्शन मेरा सैगिंग हो जाएगा, सैगिंग पॉजिटिव, और ये हॉक करेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो ये इस पोर्शन का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ गया। सिमिलरली इस मेंबर को जब मैं देखता हूं, इस पोर्शन के लिए, BC के लिए, इस तरह से ये मेरा फ्री बॉडी डायग्राम होगा। BC के लिए ये मोमेंट मेरा 6.86 है और ये 6 किलो न्यूटन मीटर है। इसका डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ये एरो
इसको इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ द एरो ऊपर की तरफ है तो आप ऊपर की तरफ जाएंगे 6.86, और यहाँ मोमेंट 0 है तो इसको ऐसे मिला देंगे। इसके ऊपर ये जो यूडियल है इसका मोमेंट, अगर इसको मैं सिंपली सपोर्टेड लेता हूँ तो इसका मोमेंट कुछ इस तरह से आएगा। तो इस मोमेंट को मैं इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये सैगिंग है। और जहां ये वैल्यू क्या आएगी ये हम निकाल सकते हैं। तो दिस इज हाफ ऑफ दिस विल बी 3.43, हाफ ऑफ दिस सेंटर में है। और ये वैल्यू टोटल मैं यहां से निकाल सकता हूं, WL²/8, 6 × 4²/8, WL²/8, ये 2, सो ये 12 हो जाएगा, टोटल 12। सो 12 माइनस 3.43 करेंगे तो ये 8.57 आ जाएगा। तो आई विल गेट दिस वन। ये मेरा बेंडिंग मोमेंट इस पोर्शन का हो गया। दिस इज फॉर दिस पोर्शन। अगर मुझे रिएक्शंस निकालनी है तो इजिली आई कैन फाइंड द रिएक्शंस। रिएक्शन निकालने के लिए मैं यहाँ पर मोमेंट लूंगा। मान लीजिए मुझे HA निकालना है तो टेकिंग मोमेंट अबाउट दिस विल बी, अगर मैं इसको पॉजिटिव लेता हूँ इस क्लॉकवाइज तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली ये भी क्लॉकवाइज है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये डिफरेंट डायरेक्शन में है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। HA इंटू दिस हाइट, इन बिटवीन कोई लोड है नहीं, दिस इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स HA, इसको अगर हम उस साइड में लेके जाएंगे तो दिस विल बी पॉजिटिव, सो HA इज इक्वल टू this divided by 4. So you will get, this will be this divided by 4. So इससे हम HA निकाल सकते हैं और HA की वैल्यू जो है वो 2.572 किलो न्यूटन आ जाएगी। एंड दिस विल बी पॉजिटिव, ये HA की वैल्यू पॉजिटिव आएगी 2.572। तो ये मेरी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन 2.572 आ गया। सेम ये भी आएगा। एंड अगर मुझे वर्टिकल रिएक्शंस VA निकालना है तो दैट आई कैन फाइंड, फॉर दिस आई विल टेक मोमेंट्स, इस बीम के हिसाब से भी मैं निकाल सकता हूँ, या मैं VC निकालूंगा और उसके बाद VA को फाइंड कर सकता हूँ। तो उसके लिए टेकिंग मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट पे अगर मैं मोमेंट लेता हूँ B पे तो ये क्या होगा, VC × 4, ये इसको ऐसे रोटेट करेगा। अगर मैं मान लीजिए इस एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेता हूँ तो ये नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद ये जो लोड है ये इसको ऐसे रोटेट करेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा 6 × 4²/2। एंड दिस, क्योंकि इसका डायरेक्शन भी सेम यही डायरेक्शन है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। इसको नेगेटिव लिया मैंने एंटी को, सो ये -86, दिस इज इक्वल टू 0। इससे मैं VC निकाल सकता हूँ। VC निकालने के लिए मैं इसको उस साइड में ले जाऊंगा तो ये क्या होगा, 16 × 348 -6.86 इज इक्वल टू VC × 4। इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो दिस विल बी 12 माइनस 12.1715, so it will be 10.285 किलो न्यूटन
you will get. So it is 10.285 kilonewton. Now the total vertical load is, कोई vertical load इसमें है नहीं, total vertical load कितना है 6 into 4 24, this minus this 10.285, you will get this one 24 minus this you will get, and it will be 13 point something. तो इससे हमें VA मिल जाएगा. तो VA is equal to 13.715. या हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि मैं इस सेपरेट इस बीम को किया, तो दिस VA is equal to VB, so VB into this and this moment, taking moment, so from this side we can find the VB. So now these are the reactions. Another question, this question came in Engineering Services 2016 and it of 15 marks. So this is a frame, mortal frame, this end is fixed, there is a UDL 50 kilonewton per meter, this G 4 meter, and there is overhang portion, and so it is a 15 kilonewton load is acting on this. So first I will find the fixed end moment. Fixed end moment for this member AB, ये UDL है और ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो 15 एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव स्क्वायर बाय 12 MBA, दिस वन ये क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, एंड द सेम 50 into 5 square upon 12 दिस नेगेटिव. और यहां पर जो मोमेंट आएगा वो सेम क्या होगा, दिस 15 into 1, तो सेम मोमेंट जो है 15 into 1, क्योंकि ये क्लॉकवाइज रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ आएगा, तो ये इसको हम बोलेंगे MBC, फिक्स्ड एंड मोमेंट फॉर BC, एंड दिस विल बी इक्वल टू MBC इज इक्वल टू 15 into 1, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये नेगेटिव आएगा. ये मेरे फिक्स्ड एंड मोमेंट आ गए. अब मुझे इसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है तो उसके लिए मैं टेबल बनाऊंगा, ज्वाइंट, मेंबर, relative stiffness, total relative stiffness, and then distribution factor. This is my table. Now this B is the member, B is the joint, तो उसका एक member BA है, another member is BD, and this is just a overhang, so this is not a member. So BA portion के लिए जो हमारी रिलेटिव स्टिफनेस आएगी वो I/L होती है, क्योंकि एंड फिक्स्ड है. I is equal to 2I, it will be 2I upon this length. Similarly for this portion, क्योंकि एंड भी फिक्स्ड है, so it will be I upon this length 4, ये I upon 4 हो जाएगा. जब हम दूसरे कंपेरिजन करूंगा तो what I will do, I will multiply this by 4, so it will be 8I upon 20. इसको 4 से मल्टीप्लाइड करेंगे और इसको 5 से करेंगे, तो ये 4I अपॉन, इसको 5 से करेंगे तो 5I अपॉन 20 हो जाएगा. ये इसको 5 से इसको 4 से करेंगे तो ये दोनों का सम 13 अपॉन 20I हो जाएगा. एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर दिस मेंबर इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, इससे 8 अपॉन 13 आएगा और ये 5 अपॉन 13 हो जाएगा. नाउ दीज आर माई distribution factors. So these are the fixed end moments and this is the distribution factor. So now I will use the moment distribution table, and that will be like this. So मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जब हम इसका बनाएंगे तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस.
ये जो मेरा फिक्स्ड एंड मोमेंट है, यहाँ पर दिस इज माइनस 104.17, and this is also same, but this is positive. और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हो जाएगा मेरा, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इस मेंबर के लिए दिस इज ए, बी एंड सी, सी एंड डी। इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना है मेरा, दिस इज 8/13, फॉर दिस मेंबर इट इज 8/13, एंड फॉर दिस मेंबर इट इज 5/13 फॉर दिस मेंबर। और ये जो मोमेंट है यहाँ पर, ये -15 है, this is -15. For the equilibrium of this joint, for the equilibrium of this joint, moment of MBA plus this MBD plus this moment, और ये moment कितना मेरा यहाँ पर, ये -15 है, ये सम तीनों का 0 होना चाहिए, but this BA is equal to how much, this is plus 104.17, MBC ये 0 है, -15, तो ये कितना आएगा, दिस विल बी 17, 89.17 पॉजिटिव बचता है। तो ये मेरा जो मोमेंट है यहाँ पर एक्स्ट्रा है, इन तीनों का सम 0 होना चाहिए, बट ये तीनों का सम 0 नहीं है, दैट इज इक्वल टू दिस वन। तो इसका मतलब ये मेरा एक्स्ट्रा मोमेंट है, यहाँ पर तीनों का सम जो कि 0 होना चाहिए वो 0 ना होकर इतना है। तो इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे हम, आई विल अप्लाई ए करेक्टिंग मोमेंट ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, इसको मैं -89.17 का करेक्टिंग मोमेंट लगाऊंगा एट दिस पॉइंट, सो दैट दिस बिकम 0। और ये -89.17 जो मोमेंट होगा करेक्टिंग मोमेंट, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू दिस मेंबर BA एंड दिस BD एज पर देयर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब इसके हिस्से में कितना आएगा, फॉर दिस मेंबर BA ये 89.17 इंटू इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 8/13 है, और इस मेंबर के लिए कितना आएगा, उसके लिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मैं इसको मल्टीप्लाइड करूंगा 5/13। तो ये जो भी मोमेंट आएगा वो इसके लिए आएगा, इसके लिए ये आएगा, और ये माइनस आएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू इसको आप जब लेंगे तो -89.17 जो आप उसको मल्टीप्लाइड करेंगे 8/13 से, तो ये -54.17 आ जाएगा। और जब आप इसको 5/3 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो यू विल गेट -34.30, दिस यू विल गेट, और ये मेरा -15 रहेगा यहाँ पर। जब आपने इस मेंबर में -54.87 अप्लाई किया, क्योंकि ये एंड फिक्स्ड है, तो इसका हाफ जो है यहाँ पर कैरी ओवर हो जाएगा, कैरियर फैक्टर इसका हाफ कैरी ओवर यहाँ हो जाएगा, इस हाफ, एंड दिस विल बी ऑफ द सेम साइन, सेम डायरेक्शंस, अगर ये नेगेटिव है ये नेगेटिव, सो -27.44 यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। सिमिलरली जो मैंने 34.30 यहाँ लगाया है, क्योंकि इस जॉइंट से ये मेंबर मेरा फिक्स्ड है, तो ये फिक्स्ड के केस में हाफ ऑफ दिस विल ट्रांसफर हियर। अगर ये सिंपली सपोर्टेड रहता तो कोई मूवमेंट ट्रांसफर नहीं होता, सो हाफ विल बी ट्रांसफर्ड हियर। नाउ सम ऑफ दिस -104.17 and -27.44 you will get -131.61. Similarly, +104.17 और -54.17 you will get +49.30, ये मेरा -15 रहेगा, और यहाँ पर 0 और -34 इनका सम करेंगे दिस,
एंड सिमिलरली 0 माइनस दिस यू विल गेट। सो ये मेरे जो है इसके फाइनल मोमेंट्स मिल गए। अब अगर मुझे इसका बेंडिंग मोमेंट ड्रा करना है तो मैं निकाल सकता हूँ लाइक दिस। अब ये मेरा इस तरह से हो गया। क्योंकि ये माइनस है तो माइनस का मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। यहाँ पर क्योंकि ये प्लस है तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है। ये -15 मीन्स अगेन एंटी क्लॉकवाइज। और इस पोर्शन के लिए अगर मैं देखूं इसको तो ये माइनस है, तो माइनस का मतलब है और दिस अगर मैं इसको यहाँ खड़े होकर देखता हूँ या मैं इसको यहाँ भी खड़े होकर देख सकता हूँ तो ये क्योंकि माइनस है तो माइनस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस एंड दिस इज आल्सो एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से भी अगर मैं इसको देखूंगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज है 34.30 और ये एंटी क्लॉकवाइज 17.15। अब मुझे अगर इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा यहाँ पर 131.61। यहाँ पर भी एरो ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये 49.30 हो जाएगा। इसको मैं इससे मिला दूंगा और यहाँ पर इसके जस्ट यहाँ पर ये 15 है एंड दिस इज आल्सो नेगेटिव। ये 15 यहाँ आएगा और यहाँ पर मोमेंट 0 होगा। दिस इज होगिंग। अब यहाँ पर क्योंकि यूडीएल भी लगा हुआ है मेरा ये यूडीएल क्या है 50 किलोमीटर पर मीटर यूडीएल है तो इसकी वजह से सैगिंग मूवमेंट भी आएगा एंड दिस विल बी ये 50 किलोमीटर पर मीटर है। यहाँ पर मूवमेंट क्या आएगा WL²/8 ट्रीटिंग एज ए सिंपली सपोर्टेड तो दिस विल बी लाइक दिस। जब हम उसको सुपर इम्पोज करेंगे आई विल गेट लाइक दिस। तो दिस वैल्यू 50 into L², L is 5/8 so you will get this ordinate। उस ऑर्डिनेट में ये अगर हम माइनस करेंगे इंटरपोलेशन से फाइंड करके तो मुझे ये मिल जाएगा एंड दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम यू विल गेट 65.80। ये 65.80 मिल जाएगा। अगर मैं इसको इस तरह से देखूं मान लीजिए मैं इसको यहां से खड़े होकर देख रहा हूं तो ये मेरा सेगिंग हो जाएगा और ये होगिंग हो जाएगा। इधर ये प्लॉट डायरेक्शन ऑफ द एरो नीचे है तो ये ऐसे आ जाएगा। दिस इज 34.30 ये 17.15। ये सेगिंग इसको ले सकते हैं यहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो ये सेगिंग हो जाएगा एंड दिस इज होगिंग। नाउ दिस इज माई अगर मैं इसको यहाँ से खड़े होकर देखता हूँ तो ये होगिंग हो जाएगा। तो एनी ऑफ द साइन कन्वेंशन यू कैन फॉलो। अगर इसमें मैंने यहाँ से खड़े होकर देखा फिर यहाँ से तो ये होगिंग हो गया ये सेगिंग हो जाएगा but that doesn't make the difference your bending moment will be this only thing is that you can specify। so here I have drawn the diagram by standing here this is the bending by standing here this is the bending moment diagram। so this is my final BMD। another questions this is example 5। this question came in engineering services 2023 and of 20 marks। analyze the portal frame shown in the figure below by moment distribution method। the frame is fixed at A and D
and has reached joint B and C. Draw BMD and sketch the deflected shape of the structure. Take EI as constant. अगर हम इसको देखें तो ये फ्रेम मेरा आइडेंटिकल है, ये एंड फिक्स्ड है, ये एंड फिक्स्ड है, दोनों की लेंथ सेम है 3 मीटर है, और ये यूडियल जो है इसको अगर हम काट दें तो ये सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो ये मेरा जो पोर्टल फ्रेम है ये नॉन स्वे पोर्टल फ्रेम है, ये स्वे नहीं करेगा, इट विल डिफ्लेक्ट लाइक दिस। तो दिस इज सिमेट्रिकल, तो दिस इज नॉन स्वे पोर्टल फ्रेम। अब इसका एनालिसिस करने के लिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसका फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालेंगे। सपोज एम ए बी मेंबर के लिए फिक्स्ड एंड मोमेंट फॉर ए बी इज इक्वल टू एम बी ए एंड बोथ विल बी इक्वल टू 0। फॉर बी सी मेंबर एम बी सी, ये मेरा क्लॉकवाइज होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा क्योंकि ये इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगा। ये हो जाएगा -16 L स्क्वायर अपॉन 12। दिस इज द फार्मूला। तो दिस विल बी नेगेटिव। एम सी बी, ये मेरा क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव हो जाएगा, एंड ऑफ द सेम अमाउंट। और यहाँ के लिए एम सी डी और एम डी सी 0 होगा क्योंकि कोई लोड नहीं है। तो ये मेरे फिक्स्ड एंड मोमेंट मिल जाएंगे। तो विल गेट this will be -21.33 and this one is 21.33, and MCD and DC both are will be equal to 0. They both are 0. तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, I will make a table and table will be like this. This is joint member, relative stiffness, total relative stiffness and distribution factor. This is the table. ये मेंबर बी हमने मेंबर लिया, बी ज्वाइंट, इसके में एक मेंबर बी ए, अनदर इज बी सी। बी ए मेंबर के लिए रिलेटिव स्टिफनेस क्या होगा, क्योंकि एंड फिक्स्ड है तो दिस विल बी आई अपॉन दिस लेंथ, और इसके लिए ये भी एंड फिक्स्ड किए जाएंगे तो इज विल बी आई अपॉन 4। तो अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाइड कर दूं और इसको 3 से मल्टीप्लाइड कर दूं, आई विल गेट दिस वन। तो टोटल विल बी 7 अपॉन 12 आई। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर दिस अपॉन दिस 4/7, दिस अपॉन दिस। तो ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हो जाएगा बी ए के लिए एंड बी सी के लिए। सिमिलरली फॉर ज्वाइंट सी, इसके लिए मेंबर क्या होगा, सी बी एंड दिस सी डी। सी बी के लिए रिलेटिव स्ट्रेंथ आई अपॉन दिस लेंथ एंड दिस आई अपॉन सी। तो टोटल क्या होगा, अगेन इसको 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाइड करेंगे, सम विल बी 7 आई अपॉन 12, दिस विल बी 3/7 एंड दिस विल बी 4/7। तो ये मेरे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आ गए, दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब मुझे इसका मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, दिस इज माय मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो दिस एंड इज फिक्स्ड, ये मेरा बी ज्वाइंट होगा, ये सी और ये डी ज्वाइंट होगा। यहाँ ए बी, इसको अगर मैं इस तरह से लूं तो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी एंड दिस वन इज डी। तो यहाँ पर मोमेंट
0 0 है। सिमिलरली यहाँ पर भी मोमेंट 0 0 है। तो यहाँ पर जो मोमेंट आएगा तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर दिस इज 4/7 3/7 बी ए और बी सी, बी ए के लिए 4/7, बी सी के लिए 3/7, सिमिलरली सी बी के लिए 3/7 एंड दिस इज 4/7। तो ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऐसे मैं बना सकता हूँ। दिस इज माई डिस्ट्रीब्यूशन। तो एम बी सी इज इक्वल टू दिस वन एंड सी बी इज इक्वल टू दिस वन। एम बी सी इज इक्वल टू -21.33, एम सी बी इज इक्वल टू +21.33। ये हमने प्लॉट कर दिया। नाउ इफ यू सी दिस एंड इज फिक्स्ड, दिस एंड इज फिक्स्ड फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस ज्वाइंट, इस ज्वाइंट के इक्विलिब्रियम के लिए सम ऑफ एम सी बी प्लस सम ऑफ एम सी डी, ये दोनों मोमेंट का जो सम है इस ज्वाइंट के इक्विलिब्रियम के लिए ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। बट दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या है? +21.33 प्लस 0 है, मतलब +21.33 का एक्स्ट्रा मोमेंट ये है, जो कि इसको 0 करने के लिए, इस सम को 0 करने के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल अप्लाई ए करेक्टिंग मोमेंट ऑफ -21.33। अगर मैं करेक्टिंग मोमेंट -21.33 का यहाँ लगाऊंगा तो ये मेरा 0 हो जाएगा। तो ये -21.33 का जब करेक्टिंग अमाउंट लगाऊंगा, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू दिस मेंबर एंड दिस मेंबर एज पर दियर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब इस मोमेंट का कितना हिस्सा इसके हिस्से में आएगा, कितना इसके हिस्से में आएगा, दैट विल बी 21.33 into for this member I will multiply by 3/7 and for this member I will multiply this by 4/7। ये 3/7 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो आई विल गेट -9.14 और 4/7 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये -12.19 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं देखेंगे तो एम बी ए, इस ज्वाइंट के लिए एम बी ए प्लस एम बी सी, दिस शुड बी इक्वल टू 0 एंड दिस इज 0 -21.33। ये -21.33 है, यहाँ ज्वाइंट पे 0 मोमेंट के लिए मैं +21.33 का करेक्टिंग मोमेंट लगाऊंगा और ये +21.33 into this distribution factor and this distribution factor, वो इसके मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये आएगा प्लस और इसको मल्टीप्लाइड करेंगे प्लस। सिमिलरली लाइक दिस, ओनली साइन इज डिफरेंट। तो ये मोमेंट यहाँ आ जाएगा। अब क्योंकि ये एंड फिक्स्ड है तो इसका हाफ यहाँ कैरी ओवर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ मोमेंट जो लगा है ये एंड फिक्स्ड है तो इसका हाफ यहाँ कैरी ओवर हो जाएगा। और यहाँ जो मोमेंट लगाया है, क्योंकि ये एंड भी फिक्स्ड है, ये एंड भी फिक्स्ड है तो इसका हाफ यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। इसका हाफ 4.1 माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस, और सिमिलर इसका हाफ यहाँ आ जाएगा। इस ज्वाइंट पे इस मोमेंट का हाफ +4.5 आ जाएगा। अब ये मेरा -4.5 आ गया, ये +4.7 आ गया, बट एल्जेब्रिक सम इन दोनों का 0 होना चाहिए। दिस शुड बी इक्वल टू 0। उसके लिए मैं क्या करूँगा, +4.57 को इसके +4.57 का करेक्टिंग मोमेंट लगाऊंगा और सिमिलरली उसको मैं मल्टीप्लाइड करूँगा 4/7 से, देन 4.57 को मैं मल्टीप्लाइड करूँगा 3/7 से। तो जब मैं इसको प्लस लगाएंगे तो +2.61 यहाँ आएगा और +1.96 यहाँ आएगा। सिमिलरली इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाइड करूँगा तो ये आएगा, क्योंकि करेक्टिंग मोमेंट है तो ये डिफरेंट साइन से आएगा। अब इसका हाफ यहाँ आ जाएगा +3.17, इसका हाफ -1.37, इसका हाफ यहाँ आएगा, इसका हाफ यहाँ आएगा। लाइकवाइज ये -0.98 आएगा। अब मैं +0.98 का करेक्टिंग मोमेंट लगाऊंगा तो कि 0 हो जाए, तो +9.98 जो लगेगा इनटू दिस आई विल गेट दिस वन इनटू दिस वन, तो इसका अपोजिट साइन रहेगा। दिस इनटू दिस आई विल गेट दिस वन, दिस इनटू दिस आई विल गेट दिस वन। सिमिलरली इसका हाफ यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इसका हाफ यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इसका हाफ 0.21 माइनस +21 यहाँ आ जाएगा। अगेन
ये -0.21 है, ये मेरा एडिशनल मोमेंट है। इसको जीरो करने के लिए मैं प्लस 2.1 लगाएंगे और प्लस 21 को इससे मल्टीप्लाइड करूंगा +1 2 एंड दिस +0.9। सिमिलरली ये -0.9 लाइक दिस। अगेन इसका हाफ इधर ट्रांसफर हो जाएगा, इसका हाफ इधर, इसका हाफ इधर, इसका हाफ इधर, तो आई विल गेट दिस वन। अब इस ज्वाइंट पे ये -0.05 मेरा एडिशनल मूवमेंट है, तो यहाँ +0.15 में 0.05 करेक्टिंग अमाउंट लगाऊंगा, उसको जब डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। अगेन इसका हाफ यहाँ आ जाएगा, इसका हाफ यहाँ, इसका हाफ यहाँ, इसका हाफ, और फाइनली जो मेरे मूवमेंट मिलेंगे, मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस कॉरस्पॉन्डिंग दिस प्लस दिस प्लस दिस, आई विल गेट दिस वन। सो ये मेरे फाइनल मूवमेंट्स आ गए। दीज आर माई फाइनल मूवमेंट्स। +7.77, this is +15.5. So now these are my final movements. तो मेरा फ्रेम था वो इस तरीके से था, यहाँ यूडीएल था 16 किलोन्यूटन मीटर, दिस इज 4 मीटर, 3 मीटर एंड 3 मीटर। तो यहाँ पर जो मूवमेंट आएगा इस हिस्से में, ये प्लस है क्योंकि +7.77 यहाँ, तो प्लस का मतलब है प्लस है तो ये क्लॉकवाइज है, फॉर दिस पोर्शन इट इज क्लॉकवाइज 7.77, ये भी प्लस है तो ये भी क्लॉकवाइज। यहाँ पर ये माइनस आएगा, ओ नो प्लस है, 15.51, ये नेगेटिव आएगा। सिमिलरली फॉर दिस सी बी इट इज प्लस, मीन्स यहाँ पर माइनस मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पर माइनस मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। तो अब अगर मैं इस मेंबर को यहाँ से उठा के सेपरेट यहाँ करूँगा तो इट विल बी लाइक दिस। इसको मैं उठा के यहाँ लेके आऊँगा तो इट विल बी लाइक दिस, एंड इस मेंबर को सेपरेट करके मैं यहाँ लेके आऊँगा, इट विल बी लाइक दिस। अगर मुझे इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है तो ये इस तरह से हो जाएगा। अगर मैं यहाँ खड़े होकर देखता हूँ तो ये इसको इधर जाएगा, सेक करेगा, और यहाँ पर इसको इस एरो को देखेंगे, ऑलवेज प्लॉट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द एरो, तो ये इधर आएगा 15.51, इसको मैं मिला दूंगा। अगर मैं यहाँ खड़े होकर इसको देखता हूँ तो ये मेरा सैगिंग हो जाएगा, ये मेरा हुकिंग हो जाएगा। ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस पोर्शन का आ गया। सिमिलरली जब मैं इसके लिए बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करूंगा तो व्हेन आई सी फ्रॉम दिस, ये इस तरह से डायरेक्शन आएगा इसका, तो प्लॉट इट इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो, तो इट विल बी 15.51, दिस इज आल्सो 15.51, इसको मिला देंगे, और इसका जो यूडीएल आएगा वो सेगिंग, यूडीएल का बेंडिंग मोमेंट सेगिंग आएगा, इस तरह से उसको सुपर इम्पोज कर देंगे, तो ये इस तरह से हो जाएगा। ये सेंटर वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम ये WL²/8 होता है, 16 इंटू L इज 4 मीटर, तो दिस विल बी 32, तो 32, ये टोटल 32 है और ये सेम रहेगा, तो 32 माइनस 15.51 करेंगे तो आई विल गेट 16.49, ये 16.49 आ जाएगा। ये मेरा बेंडिंग मोमेंट इस पोर्शन के लिए आ जाएगा। सिमिलरली इसी के अंदर खड़े होकर अगर मैं यहाँ से देखता हूँ इसको, तो ये मेरा हुगिंग हो जाएगा, आई विल प्लॉट इट इन दिस डायरेक्शंस एंड दिस विल बी लाइक दिस, ये मेरा सेगिंग हो जाएगा। इसको मैं हुगिंग बोलूँगा, इसको सेगिंग बोलूँगा, तो इट विल बी लुक लाइक दिस। So this is my
बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये मेरा फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। अगर मैं तीनों को क्लब करूंगा तो आई विल गेट दिस वन। दिस इज माय बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। नाउ फॉर ड्राइंग द डिफ्लेक्टेड शेप इलास्टिक कर्व, यू कैन से दिस बीम, इफ यू सी, ये इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगा क्योंकि ये एंड फिक्स्ड है, और यहां से ये इस तरह से जाएगा, ये सैग करेगा, यहाँ हो करेगा। इस पोर्शन के लिए ये इस तरह से रहेगा, ये आई विल ट्रीट इट एज ए फिक्स्ड बीम, और यहाँ के लिए ये इस तरह से रहेगा। तो आई विल गेट माय फाइनल डिफ्लेक्टेड शेप इस तरह से रहेगा। इसमें जहाँ भी मेरे पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर्स हैं, जहाँ पर मेरा बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज कर रहा है, दीज आर माय पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर्स। एक ये है, ए है, यहाँ भी साइन चेंज कर रहा है, तो ये मेरे पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर रहेंगे, जहाँ पर ये अपना कर्वेचर चेंज करेगा। तो इट विल बी फाइनली, इट विल बी लाइक दिस वन डिफ्लेक्टेड शेप, फाइनली आई विल गेट दिस वन। तो इस तरह से ये बन जाएगा। वन थिंग यू शुड कीप इन माइंड कि जो एंगल बिफोर डिफॉर्मेशन दोनों मेंबर्स के बीच में 90 था, तो आफ्टर डिफॉर्मेशन आल्सो this angle will be 90. If it deflect like this, so it will obviously deflect like this, so that this angle will be 90. Similarly, यहाँ पर भी अगर मैं ये टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और यहाँ पर जो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा मैं इसका it will be like this, and this member will basically meet like this. So this ये एंगल भी 90 हो जाएगा। So this is my deflected shape now. So this is the end of the lectures. I hope you enjoyed the lectures. It's an important one. And once again, sorry for the disturbance, electronic failures. So I have made this video in 2 parts. So I suggest you to see both the videos in one go. Thank you very much.